just before we English Hindi mix. Yes. So initially I introduce you, post that you can start the session. Sure. Manoj, you're live. Yeah. Dear partners, warm welcome from AssetPlus. Today we have Mr. Mayukh Datta, Head Product and Strategy Communication from Mirae Asset Management Company. Mr. Mayukh has 23 years of work experience, of which 17 years has been in mutual fund industry. Mr. Mayukh had worked in asset management company, insurance, and he worked in retail financial services and in NBFC domain as well. Today he is going to discuss on beyond SIPs, on which he is going to cover on the topic power of compounding, lump sum in SIPs, and how debt SIPs help in equity investing. Over to you, Mr. Mayukh. Okay. Thank you, Manoj, for the warm introduction and a very warm welcome to all your participants and your partners who are a part of this session. Before I start, I just wanted to check, do you want me to do this in English, Hindi, or you want me to do it fully in English, depending on what is comfortable with the audience? We can go with Hindi and English mix. Okay, thank you. Thank you, Manoj, for that. So, welcome to all of you. आप सभी को थैंक यू, आप सभी के लिए जिन्होंने आज शाम को हमारे साथ ये जुड़े हैं और इसको जानने के लिए. लेट मी स्टार्ट विद द डिस्क्लेमर. इसमें ऐसा कुछ भी चीज नहीं होगा जो शायद आपको ना पता हो, बट थोड़ा सा आपको सामने और आपके जहन में लाने के लिए ये एक्सरसाइज है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पे इसको खत्म कर सकूं, जिससे कि आपका समय भी अच्छा इस्तेमाल हो, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर. वैल्यू प्लस से हमारा काफी पुराना रिश्ता है मेरे एसेट का, और हम लोगों ने काफी देर से इस पे बात करा कि ऐसा क्या वैल्यू ऐड है और हम ऐसा क्या बता सकते हैं जो शायद पार्टनर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज में ना पता हो. और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत खास ऐसा हो जो मैं आपको बहुत ज्यादा आपके लिए मैं कॉम्प्लिकेट करना चाहूंगा, बट कुछ बड़ी अच्छी और छोटी और बड़ लेकिन बहुत ही स्वाभाविक चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए. तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको वो कुछ चीजों के बारे में मैं बता पाऊं. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो एसआईपी में पूरी इंडस्ट्री में और सारे इन्वेस्टर्स को नहीं पता हो, एडवाइजर्स को ना पता हो, पार्टनर्स को ना पता हो. आप इंडस्ट्री लेवल पे देख ही रहे हैं आज की तारीख में कि एक छोटी सी चीज एसआईपी की जो कोशिश करते हैं कि आज 10 साल के अंदर एसआईपी पूरी इंडस्ट्री के लिए नाउ इट हैज बिकम ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ ऑफ सिप मनी एवरी मंथ. ये कोई छोटा रकम नहीं है. आज 5 करोड़ से ज्यादा फ्रेश एसआईपीज इंडस्ट्री में चल रही हैं, और उसमें से आधे से ज्यादा 5 साल से पुराना है. सो नॉट ओनली लोग एसआईपी कर रहे हैं, बट एसआईपी में बरकरार भी रख रहे हैं. एंड ये आई एम श्योर इस सबका फलस्वरूप उनके लिए जो होगा, जो रिजल्ट होगा, जो वेल्थ क्रिएशन है, वो काफी अच्छा होगा अगर वो बने रहेंगे तो. लेकिन एसआईपी को बहुत से टाइम लोग ये सोचते हैं, और ये प्रेजेंटेशन करने का कारण ये था कि लोग एसआईपी के बारे में ये सोचते हैं कि एक बार शुरू कर दिया दैट इज इनफ. एक्चुअली एसआईपी इज अ कैश मैनेजमेंट इशू, क्योंकि मेरे पास एक तरफ से जब मेरे इनफ्लोज आते हैं वो 1 महीने के रहते हैं, प्लस मैं जब पैसा लगाना चाहता हूं तो मैं टुकड़ों में लगाना चाहता हूं क्योंकि मुझे मार्केट के बारे में नहीं पता. तो ये कैश फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और दूसरा एक ये एवरेजिंग और मार्केट की टाइमिंग को का प्रॉब्लम सॉल्व करता है. दैट इज वेयर एसआईपी एक्चुअली कम्स इन. लेकिन एसआईपी ये रिटर्न कैसे आती है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को सोचने के लिए ऊपर मेरा कोशिश होगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा मजबूर हो, थोड़ा सा सोचें आप कि सिर्फ एसआईपी से इनफ है कि नहीं, और एसआईपी में हमें क्या हम और कोशिश कर सकते हैं एसआईपी के बारे में. तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस प्रेजेंटेशन टुडे. We will try to cover basically these 3 topics. मैं इनके ऊपर आऊंगा कैसे, जैसे as we go about talking about it. Basically तो पहले इस पे बात कर लेते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है. बचत और निवेश का एक फर्क होता है. कोई चीज पैसा बचाना और पैसे को काम पे लगाना, यही फर्क है कि सेविंग्स क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है. हाँ, ये सब लोग जानते हैं कि जो क्या हमारे को जो पैसे हमने खर्च करके जो बचा है उसको बचत माने, या पहले बचत को अलग करें और जो बचा उसको हम खर्च करें. ये तो आदि समय से इस बारे में डिस्कशन होता रहा है, तो मैं इसके ऊपर समय नहीं लगाना चाहूंगा. लेकिन बचत और निवेश का बहुत बड़ा फर्क है जो हमेशा आपको अंडरलाइन करना चाहिए, इज दैट कि जब भी आपने पैसे बचाए, बचाना सिर्फ अच्छी बात है, वो शुरुआत है, पर वो अंत नहीं है. इट इज द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, इट इज नॉट द एंड ऑफ द डिस्कशन. और अगर बचा लिया सिर्फ, तो उसको महंगाई मार जाता है, और उसको खाली रखने से पैसे में उसका कोई
ग्रोथ नहीं होता, उसको काम पे लगाना पड़ता है। और जब आपने काम पे लगाया तो इसका मतलब होता है कि पैसे को काम पे लगाना इज इन्वेस्टिंग। उसको कहीं पे लगाया जिससे कि वो अपने आप से कुछ उसमें बढ़ोतरी हो पाए, और वो बढ़त बेसिकली कंपाउंडिंग या उससे आता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस विच यू शुड ऑलवेज गेट। और ये क्यों करना चाहिए, बहुत सिंपल है। हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसका सबसे बड़ा फिल्टरिंग पॉइंट यही है कि सेविंग्स पैसे जेब में रखे हैं या खर्च करूं या क्या करूं, या पैसे को इन्वेस्ट किया या बचाया। उसका सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेशन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी इन्वेस्टमेंट में इज नॉट अबाउट कि इसमें प्रिंसिपल का क्या होगा, रिटर्न क्या आएगा, वो बात की बात है। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि क्या समय के साथ वो पैसा अपना वैल्यू खोता है अगर, तो देयरफॉर इन्फ्लेशन के ऊपर मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है और हमेशा आप इन्वेस्टर के साथ यूज कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स को लेके इसको ऐसे सोचे कि आज आप इन्वेस्टर हैं, नॉट दैट कि आप आज डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एडवाइजर हैं। थिंक अबाउट ऑफ योरसेल्फ एज एन इन्वेस्टर। तो जब आपके पास लाख रुपया बचता है, आप कहीं पे लगाते हैं, तो सबसे पहला चीज सब लोग ये बात करते हैं कितना रिटर्न आएगा, जबकि मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होना चाहिए कितना रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद आएगा। आज एक आदमी, सोचिए आपका क्लाइंट, आज कल सैटरडे है, वो घर से निकलता है, अपना स्कूटर लेता है और जाके उनकी बीवी बोलती है कि देखो एफडी मैच्योर हुआ था वेडनेसडे को, आज सैटरडे है, प्लीज बैंक में जाके ये एफडी मैच्योर है, इसको रिन्यू कराओ। तो एफडी मैच्योर करने गए तो आज के तारीख में बैंक में एफडी मिला 5% का, या 5.5%, 6%, चलिए 6% मान लेते हैं। और वो साथ में वाइफ ने ये भी बोला कि बच्चे का स्कूल का फीस भी है, लास्ट क्वार्टर का फीस है, प्लीज वो भी दे के आना। तो पिछले साल 10,000 रुपए दिए थे लास्ट क्वार्टर का फीस, इस बार 12,000 हो गया है। कोविड के चक्कर में उनके स्कूल का फीस बढ़ गया है। तो फीस बढ़ गया है 20%, और एफडी का रिन्यूअल हुआ 5.5% पे। तो खर्चे का रन रेट इन्वेस्टमेंट के रन रेट से कहीं ज्यादा है। सो प्लीज आस्क दैट इन्वेस्टर कि एक्चुअली आप पैसे बचा रहे हो या गवा रहे हो, या क्या आपने इसके बारे में सोचा। हम बहुत से टाइम ये चीज भूल जाते हैं और इन्वेस्टर इसके आगे नहीं सोचता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई वुड से व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वॉलेटिलिटी, ये सब तो आपको पता ही है एवरेजिंग के बारे में। बट मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा। वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होता है, यूनिट्स कम मिलते हैं, तो सभी जानते हैं, उससे एवरेजिंग होता है। लेट्स गो एट अ लिटिल बिट अहेड की पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। ये भी पुराना एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल को देखने का एक नजरिया मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। जया ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 30 साल की उम्र में, और उन्होंने 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट किया, विच मीन्स 10,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए। एंड शी इन्वेस्टेड फॉर 360 मंथ्स, विच इज 30 years, 10,000 rupees per month. So her investment went to 3,60,000 rupees, converted into 1.62 crores. This has been assumed at a return of 8% per annum compounding. उनकी फ्रेंड ने 10 साल बाद SIP शुरू किया। She started at the age of 40, so she invested 10,000 rupees for 20 years. So which is 2,40,000 rupees. This became 65 lakhs. But the most important factor which everybody forgets in this example is both of them had the chance of stopping their SIP, pausing their SIP, increasing their SIP, decreasing their SIP. So what is SIP is that over a period of time, 30 साल तक 360 ऐसे महीने थे जब जया जी अपना SIP बंद कर सकते थे, स्कीम चेंज कर सकते थे, कुछ दिन SIP बंद करके कुछ और कर सकते थे, बिकॉज वो 30 साल तक बस बनी रही। समय ने उनको वो रिटर्न दिया, जो कि पैसे जोड़ने की जो उनकी कैपेसिटी थी, अचानक जो वो जोड़ते गए वो पैसा गुना होता गया। तो प्लस साइन एक टांग पे खड़ा रहता है, तो इसलिए वो दौड़ नहीं सकता। जब आप समय देते हैं, समय के साथ ये प्लस साइन थक जाता है और एक पैर पे खड़ा नहीं रह पाता, तब वो 2 पैर पे चला जाता है। जैसे वो 2 पैर पे जाता है तो वो दौड़ने लगता है। And that is the difference between adding and multiplying. That is the difference between saving and investing. That is the difference between adding and compounding. समय is the biggest ingredient, सबसे बड़ा इनपुट है जिसके वजह से ये इन्वेस्टमेंट ये रिटर्न दे पाता है। लोग हमेशा परसेंटेज रिटर्न के ऊपर बने रहते हैं, उसी पे सारी मार्केट, सारी डिस्कशन फिक्सेटेड है।
बट एक्चुअली उस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा इनपुट है इन्वेस्टर की तरफ से इज नॉट 10,000 और 1 लाख और 1,000 रुपीज और वट एवर, इज द टाइम। टी इतना बड़ा पावरफुल है कि जब आप समय देंगे तभी आपका इन्वेस्टर निखर के आएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से। समय वो चीज है जो आपकी एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करता है, आपकी सेविंग को इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग की जगह देता है। जितना आप इसको समय देंगे उतना ही ये निखर के आता है। जितना इसको छेड़ेंगे, जितना इसमें इनपुट करेंगे, दैट इज दी, उतना ही इसकी कंपाउंडिंग की कैपेबिलिटी कम हो जाता है। इसको एक दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। इसको सब जानते हैं, सब जानते हैं इनको, इनके बारे में इतनी किताबें लिखी गई हैं, देयर इज सो मच रिटन, सो मच टॉक्ड अबाउट दिस पर्सन, बट एवरीबडी इज नॉट एबल टू फिंगर पॉइंट द मोस्ट बोरिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट दिस पर्सन। इन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया, सो ही स्टार्टेड अर्लीस्ट। जया जी से भी 20 साल पहले शुरू किया। ये 90 साल की उम्र तक भी स्टेड इन्वेस्टेड है। He made his first $1 million at the age of 30. At the age of 60, which is another 30 years, that 1 million became 12 million. Today, actually, at 60 age, he could have retired, which is considered the universal age of retirement. He could have retired. And he said, I've made enough. I've made 12 times money. Let me take out all my money and this, no need to be staying invested. He stayed invested another 30 years possibly. And he still invested. And imagine today he is worth $90 billion. And he has made most of his money after his retirement age, after when people say that aapko paisa nikal lena chahiye. So this is the power of compounding. It is not about the stocks which he would have bought, where he would have invested, but the amount of time he was willing to give to his investment. But एक और आदमी है, does anybody know him? I'm sure not many people know him. ये एक आदमी था, ये 2014 में इनकी मृत्यु हुई। He died in US. जब इनकी डेथ हुई, एक लोकल अस्पताल में ये इनकी डेथ हुई, तब लोगों ने पूछा कौन है ये, क्या हुआ, क्यों ये, why he came into the headlines, क्योंकि वो लोकल हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई और इन्होंने कुछ $8 मिलियन, आज के तारीख में it is about close to about almost about I would say 65 to 70 million crores of rupees he had given to his kids. उनको 15 करोड़ रुपए दिए, अडॉप्टेड बच्चे थे उनके। लोकल हॉस्पिटल को करीबन उन्होंने 30 करोड़ रुपए दिए और लोकल लाइब्रेरी को इन्होंने 15 करोड़ रुपए दिए आज के रेट के हिसाब से। तो लोगों ने कहा इतना पैसा कैसे आया इनके पास? ये आदमी क्या करता था, इसने 25 साल तक एक गाड़ी के गैराज में काम किया, 17 साल जेसी पेनी, जो वहां का शॉपर स्टॉप है, वहां पे उसने लिटरली पोछा लगाया। जब ये मरे तो एक 2 कमरे के घर में रहते थे। इनकी वाइफ थी, इनके अपने बच्चे नहीं थे, इनके वाइफ के बच्चे थे जो अडॉप्टेड बच्चे थे। इनके वाइफ की पहली शादी के बच्चे थे, उनको 15 करोड़ दिए। वाइफ की डेथ हो चुकी थी। और फिर पता किया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इनको कुछ इनके बाप दादा ने इनको पैसा दिया था तभी इन्होंने इतना पैसा सिर्फ चैरिटी में दे दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने भी सिर्फ एक काम किया, अच्छे कंपनीज के स्टॉक खरीदे थे और कई सालों तक, उनको 60 साल तक, मरते दम तक इसको लेके रखा। So his return is also similar to Warren Buffett's return, and both of them are a story of compounding, that they bought good and stayed invested. हम SIP में ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली अगर आप 20 साल, 10 साल, 30 साल तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। So compounding is the return which the universe give back to all these people, and this is exactly where SIP return should be talked about. जितना अकाउंट स्टेटमेंट का पेपर पुराना होगा उतना ही रिटर्न वो निकल के आएगा। बने रहने से, परसिवियरेंस इज द रिटर्न ऑन कंपाउंडिंग। सो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स पुट अवे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंपाउंडिंग इज मैजिकल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे ऊपर जब फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, इट बिकम्स अ बिगर बेस, इट इज वर्किंग फॉर यू। आप अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं एज यू आर स्टार्ट, क्योंकि इनकम बढ़ता रहेगा, लेकिन SIP अमाउंट सही रहता है, उसके ऊपर नेक्स्ट स्टोरी में बात करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंट इज स्टेइंग ऑन कोर्स।
मार्केट आएगा, डराएगा, वॉलेटिलिटी आएगी, डराएगी, but that is how those asset class is supposed to behave. Therefore, you have to work on that man. That do not move your goal. If your retirement is from 30 years, then how markets behave in the next 1 year doesn't matter. You cannot move your goal post. Catching the bad days, सिर्फ SIP करना is enough? I think so not. Because अगर सिर्फ SIP करके ही पैसा बच जाए, तो investor बोलेगा, oh, this is so easy. I can do it myself and so on. No, it is not that easy. अगर इतना easy होता, everybody would have done it. Everybody knows कि SIP volatile होता है, and that is that volatility time when you as an advisor come in. कि जब NAV 10 रुपए पे या 20 रुपए पे तो सब लोग आने को रेडी है, 4 रुपए जब जाएगा, 6 रुपए जाएगा, that is the time that you stay invested, because those bad days are not bad days. Those bad days help you reduce the cost as a distributor. As an advisor, your job is predominantly to reduce my cost of acquisition of units. Return बाजार दे देगा, आप मेरा कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो, मेरे यूनिट्स का कॉस्ट कैसे कम करोगे. जैसे जैसे मेरे यूनिट्स के कॉस्ट कम होते जाएंगे, मेरा रिटर्न बढ़ता जाएगा. तो क्या 6 रुपए या 8 रुपए वाले दिन क्या आप मेरे को ज्यादा खरीदवाओगे कि नहीं? This is one data which showed that normal return पे, if you had an SIP of 1,000 rupees for the last 6 years, if you are able to do an additional purchase whenever markets fell by 1%, if you were able to get me an additional purchase when markets fell to up to 2%, up to 3% or 4%, हर fall को buying opportunity देखना बहुत जरूरी है, and that is where the advisor comes in. Advisor handholds me to stay invested for 30 years. That will give compounding. Also during this 30 years, on the bad days, my advisor calls me and tells me कि साहब आज मार्केट गिरा है, आज 2% गिरा है, आज 3% गिरा है, डरिए मत, लगाइए. और ये करना इसलिए जरूरी है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट 1 year आई वुड से, आई विल जस्ट शोकेस. अगर मैं 1 साल का डेटा लूं, आज निफ्टी का डेटा लेता हूं, there are 46 days in the last 365 days. Out of the last 365 days, trading days were 246, और उन 246 में से 46 days the fund, the Nifty closed 1% higher than its lowest point. That means within the day Nifty was down, and you could invest into the market. So there are days when volatility is very high. 46 such days you could have invested into the market at a lower rate, get a lower NAV, and be able to invest in equity. That is where the advisor comes in. So the advisor helps me buy those bad days. क्योंकि bad days में if I am left alone, if I were to do it direct, मैं डर जाऊंगा, क्योंकि volatility इतना strong होगा कि मैं additional purchase करने की हिम्मत नहीं होगी. That is where you come in and you are able to value add. Why? A, you are saving me from inflation. B, you are reducing my cost. By holding my hand and buying on those bad days, you are reducing my cost. Return बाजार दे देगा. लेकिन buying on those bad days help me overcome volatility, get a better superior return than just a rupee cost averaging. Please think about that when you are get in this business. I hope you have understood that. Now comes where the advisor really shines in creating plans for investors, and that is where SIP is very important on a different perspective. हर एक के लाइफ में हर एक का प्लान, their financial plan is a mix of a lot of small plans. Millions of plans make one financial plan for somebody's life for 30-40 years. So as an advisor, आप short term भी जरूरत देख रहे हैं, मेरा medium term requirement भी देख रहे हैं, long term में retirement, peace of mind or whatever, and also contingency also. लेकिन हर एक का plan also is a purpose of the goal. So we usually invest for long-term goals, but सबके life में not everything is long-term. An investor is actually a collection of many short-term plans also. मुझे retire तो आज से 20 साल बाद होना है, लेकिन हर 2 साल या 3 साल में मुझे phone बदलना है. तो यहाँ से लेके मेरे retirement तक there will be 10 phones, and no phone costs less than today 40-50,000. So 10 phones means 4 lakh rupees.
In the next last 2 साल से मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाया, so in the next 10 years I will probably do 2 to 4 or 5 holiday trips. Each holiday trip is now about 50,000 to 2 lakh rupees. I will need to change my laptop. I need to buy gifts for my family. I need to have a contingency plan, because anytime medical or any event may happen, where is my plan for that? I need to buy a house or improve my house and so on. ये सब खत्म होगा तब जाके मैं retire करूंगा. But before my retirement, there are so many other things. And the biggest example I would say is children's education. Any child which you have in your client's portfolios have children who are in the class 3, 4, 5. Before they get into class 10, 9, 10, 11, 12 and get prepared for their entrance exams, there is so much money being spent by parents on education, on tuition, on extra classes, on Vidya Mandirs or the tutorials and so on. Are you as an advisor making plans for them? Because if you are not, what are they doing? They are going and dipping into their retirement kitty. So you need to create SIPs which are separate for separate goals. And the important factor I'm trying to say is that short to medium term goals के लिए भी SIP होना चाहिए. क्योंकि if short to medium term requirements के लिए, if we do not make a plan for them, then short to medium goals become problems. मैं retirement तो तब करूंगा, end में करूंगा if my advisor has not made a plan for my medical insurance which is coming due in March. If he's not made a plan for my cash outflow for my life insurance premium which gets due between Jan to Feb. इस सब चीजों के लिए investors look at recurring or doing FDs or whatever. They don't look at mutual funds. While here we have lovely sort of products available on the mutual funds on the debt side, where if you do SIPs, you can be taken care of by this. You can look at doing SIPs or bank FDs or whatever for short-term goals. You can look at doing short to medium-term goals for education, for long-term debts, for buying a house and so on. And for your long-term goals, which are 5 to 6 years away, you can look at equities. So what I'm trying to say is that there is enough focus on wealth creation, while in the saving side, the investor can give a lot of money they can do, but we do not talk about SIPs on debt for that. And today the debt funds are very well created where it can take care of our short to medium term goals also. Think about it. I'll give you a simple example. Every client, every household today has 4 to 5 cash flows every year. What are those cash flows? Those cash flows are as follows. Every house has a school or a college fees which goes into 2 to 3 lakh rupees. Every house has a PPF commitment of the year, which is say 1 to 1.5 lakh rupees. Every house has a car insurance, a medical insurance, as a life insurance. These all three put together is about another 1 to 1.5 lakh rupees. आप ये total करेंगे अगर, you will say that every household is paying 4 to 5 lakh rupees every annum on these payouts. And these are cash outflows and nuisance for a person. If you are just able to give them a liquid plus fund SIP, and every year your system throws up कि अच्छा मयूख का अप्रैल में PPF ड्यू होगा, रिडीम करो, लिक्विड प्लस से SIP चल रहा है, लिक्विड प्लस से रिडीम करो, let him pay his PPF. His car insurance comes due in November, redeem and pay the car insurance. The last quarter of the year, he pays his medical and life insurance, redeem from liquid plus, his SIP is continuing liquid plus, and pay off his money. So this is a beautiful way by which, if you are taking care of my cash flow problems, I will be now you have taken care of my nuisance. आपने मेरी सिरदर्दी को ऊपर आपने solution दे दिया है. Now I will stay committed to my equity funds and equity compounding. So what I'm trying to tell you is that the financial advisor helps me choose the right fund in the debt side for my immediate goals. And because if you are able to do that, you are putting debt and equity asset allocation in the portfolio. And by doing that, the very important factor, please yaad rakhiye,
by doing SIP in debt, you are safeguarding your equity SIP. Nahi to otherwise every time I would have gone into my equity as investments, taken out money and paid my short-term प्रॉब्लम्स और शॉर्ट टर्म गोल्स. सो लॉन्ग टर्म गोल के लिए जिससे शुरू किया था, लेकिन उसमें से आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आप ऐसा निकालते रहोगे तो एंड में जिस गोल के लिए इक्विटी में मैंने एसआईपी किया था उस गोल तक आते आते मेरे पास कोई कॉर्पस ही नहीं बचेगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन डिस्टर्बिंग equity. I have always been disturbing equity from compounding and giving me its actual return. अगर मैं हर एक साल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कभी कोई और रिक्वायरमेंट से निकाल लूं, so it is very important for you as an advisor to think about that if I do asset allocation, why can't I do asset allocation in SIP also? Short term, long term goals are different. They are at different time frame. So therefore, different SIPs for different objectives. Short term, medium term objectives are taken care by SIP. जब मैं वो करूंगा तो इन्वेस्टर मेरा इक्विटी का एसआईपी नहीं डिस्टर्ब करेगा, और जब वो मैं उसके कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं तो वो इक्विटी के एसआईपी को नहीं डिस्टर्ब करेगा. और जब आप इक्विटी के एसआईपी को इन्वेस्टमेंट को नहीं डिस्टर्ब करते हो तो मैंने क्या बताया था शुरू में, द टाइम स्टेइंग इन्वेस्टेड विल गिव द रिटर्न. Again, the example, if Jaya had stayed invested on the equity side, that is why her 3,60,000 became 1,65 lakhs. That means जो कोई नहीं बताता is also the fact that Jaya also had to do SIP on the debt side so that कभी home improvement, कभी गाड़ी का installment, कभी स्कूल के फीस, कभी मेडिकल इमरजेंसी, वो सब उस SIP से टेक केयर हुआ, तभी ये वाला पार्ट could become a corpus for her to retire. So a SIP in debt helps you maintain an SIP and helps you compound on the equity side. Please think about that the next time when you plan somebody's SIP book and do your SIP allocation for an investor. No one knows where market will move. Similarly, no one knows kahan interest rate move karega. जैसे आप timing and not time in the market is important, तभी आप SIP करते equity. Same is good on the debt side also. Debt में long term debt में आप लगाइए if you have a long term debt allocation. If you don't like that also, at least hybrid में SIP करिए. लेकिन long term debt में आपके पास कुछ equity का allocation भी होना चाहिए और debt का allocation भी होना चाहिए. And so you are getting a benefit of discipline investment categorization. ये सब तो है ही, लेकिन SIP in debt helps you achieve your short term goals. It reduces your overall debt portfolio. थोड़ा डेट का एलोकेशन भी होता है, एसेट एलोकेशन बाय डिफॉल्ट होता है, और इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है तो डेट का फंड भी रिटर्न देता है, जैसे इक्विटी लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से रिटर्न देता है. और ये करने से आपने अपने थिंक अबाउट डेट एसआईपी एज एन इंश्योरेंस टू योर डेट इक्विटी सिप बुक. जब आप इक्विटी के इन्वेस्टर्स उसको छेड़ते नहीं है तो आपका अर्निंग, आपका ट्रेल, आपकी कंपाउंडिंग आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है. बजाय कि put everything in equity, then clients get iffy. They get when volatile time comes or when their achanak their requirement comes, because their plan does not have a contingency or short-term goal requirement, they always keep on taking out of equity and disturbing equity compounding. So this is what I wanted to show. For example, equity का 10 साल का रिटर्न अगर 14% है तो 10 ईयर जीसेक के में भी रिटर्न 9.5% है. अगर आप 50-50% भी डालते अगर और एसआईपी करते, यू आर टॉकिंग अबाउट 11 to 12% कंपाउंडिंग without taking any credit risk, without taking any mid cap volatility or small cap volatility also. So this is the beauty which you can do in your portfolio, which you advise to your clients. यहीं पे एडवाइजर का हैंड होल्ड करना जरूरी है. आप प्रोसेस शुरू कराते हैं, आप एसेट एलोकेशन करते हैं एसआईपी पे, आप टॉप अप करते हैं ऑन दोस बैड डेज, you stay the course but review the scheme. Please, always investors should stay invested, should be staying committed to the concept of SIP, not necessarily the scheme of SIP. That is where the advisor comes in. Advisor comes in to highlight कि हम SIP कर रहे हैं, portfolio review कर रहे हैं, this SIP in this scheme is for this objective. If the objective is done, maybe you need to look at something else, look at the next objective, but be crucially always observe the scheme.
but SIP should continue. SIP should grow, but the underlying scheme can always be changed if it is not matching or not doing what it was intended to do, because the overall objective is to achieve the investor's goal. Stay committed to the concept of SIP, increase SIP. Stay invested to the fact that SIP is for a certain objective. Each should have an objective, but the scheme underlying can always change, and that is where you come in. So therefore, as a conclusion, I'm saying that investors and through you should consider equity and debt for SIP. Equity works usually for long-term goals. Long-term debt in short-term products can also help in achieving short-term goals. Annual cash requirement savings behavior आता है. Risk reward adjustment automatically हो जाता है जब आप दोनों asset class में डालते हैं. SIP debt भी volatile है, equity भी volatile है, लेकिन दोनों का range कम होता है. That is why SIP helps in achieving that advantage of volatility, both equity and debt, and it helps you in your goal planning. Different goals, different tenure, different products, and therefore both compound and help you achieve your goal. Please do think about it beyond just doing SIP. And this is a message I always give to investors. Think about it, save and invest. Save because you can, but save because you need to. Save because you need something in the future. Save because you can have a better future. आप इसलिए सेव करिए क्योंकि आपको पता है कुछ चीजें फ्यूचर में आने वाली है, लेकिन आप उसके लिए ज्यादा बचाइए for things which you don't know may happen in future. You save and invest because the ultimate goal is to be that you have a control over your time. Save so that you are free of goals, because for the ultimate goal is to be free and have control over your time. Right? You save for a home, you save for a child education, you save for a marriage, you save for a car, you save for a retirement. But actually the goal should be to save for things which you do not know may happen in the future, but save and invest for a situation where you don't have any goals, you have all your goals are achieved, because that is when you control your time. एक 3 BHK और 4 BHK घर के बीच में यही फर्क होता है कि आपको 5 साल और काम करना पड़ता है for another 1 more BHK, for 1 more bedroom which you may not need. You can work but become free, stay happy in a 3 BHK or a 2 BHK, but not work or always be under pressure that you need to work or create money to pay for that one extra luxury, but actually have one less luxury, but you are free to be having your control over your time. So this is one example. And I have been in the MFD and have been managing MFD for a very long period of time. I would love to create this poster for my MFD friends. ये हिंदी में लिखा हुआ है तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. For my English friends, people can read the English. It's basically, I always tell an advisor that are you in a forecasting business, क्योंकि most of the time हमारा business इसी में चला जाता है कि अरे कौन सा fund अच्छा लग रहा है, large cap, mid cap, small cap, और हमेशा यही question होता है. In fact, investors also would ask. So my answer would be कि we are not in the business of forecasting. हम भविष्यवाणी के business में नहीं है. इसलिए कि बाजार कैसा लगता है, इसका सही जवाब यही होगा कि जब बाजार गिरता है या चढ़ता है तब इन्वेस्टर आपको कैसा लगता है. ये बड़ा सवाल है. इसी से पता चलेगा कि as an advisor मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ. So therefore, to an advisor, to an investor, as an advisor, I would say कि हमारे साथ जुड़िए और निवेश करिए और निवेश जोड़ते जाइए. समय के साथ जोड़ते जाइए क्योंकि समय ही सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है. समय सबसे ज्यादा गुणवान है. जोड़ एक दिन जोर दिखाता है, जोड़ एक दिन गुना करता है. जोड़ मतलब एडिशन एक दिन गुना करता है, हो जाता है, क्योंकि एडिशन एक दिन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि समय ही वो गुण है जो जोड़ को गुना बनाता है. समय ही वो इनपुट है जिसकी वजह से सेविंग्स इन्वेस्टमेंट होता है. So in English, for my people, for my friends in English, we are not in the business of forecasting. If your question is, what do we feel about markets? Our response is, how do you feel when markets go up and down? How do you behave and feel is more important than how markets behave. So therefore, allow us to start your investing journey. Keep on saving and then save a little bit more. And keep on contributing
because the time is the biggest contribution which you can do. For with time, your savings will convert into investments. For with time, addition will change into multiplication. Invest for a goal, because for the goal is the guiding light. For time, for how long do I have to stay invested, that will be your goal, not because how you, I, or anybody else feels about large cap, mid cap, and small cap. The longer is your goal or shorter is your goal, that will decide for how long you should stay invested and where you should invest it, not about markets. So with that, I'll end. I have taken about half an hour. That was the intention of this conversation. I wanted to keep it in half an hour for my set of my AA. As I said, not many of that is anything which you don't know, but sometimes these Friday sessions help you underline some things which we miss out during our normal conversations. So thank you again to Value Plus, to Manoj, to Vishrant for allowing me this opportunity to air these simple stories. I think these are very important and help us refocus back on our businesses. If you think this was worthwhile, thank you so much for your time. If there are any questions, I'll try to answer them to my best of my ability. Thank you, Mayukh. Thanks for a wonderful session. And dear partners, session is open for Q&A. You can please mention your questions in the live chat. I would read out to the presenter. And Mr. Mayukh, there is a advisor who is asking, like, so the biggest dilemma when markets keep on correcting, so it continues for a longer period, if suppose, and how do you advise where they can do some lump sum purchase in the meanwhile? So I would say that if I have technically been an SIP investor for all my life, I would always be happy if markets were to go down, because what market has gone down has now, I cannot control the fall in my existing investment. And that's when 99% of my investors think about it and they lament or they are afraid of the situation that already my existing investments are going down. Should I do a stop loss or take out? To them, my answer would be, if your goal is 20 years away, then there is no point getting afraid about it. In fact, today is the time for you to buy more, because if your goal is still 20 years away, then this is a fantastic opportunity. Why? Because in 20 years, the NAV of the market or the economy or India will not be where it is right now, as it is not where it was 20 years back. So 20 years into the future also, it will not be here. It will be better than this. So to that extent, you have two choices, that A is today be afraid about the volatility, lament or be remorseful, दुखी हो जाएंगे आप इस बात से कि अरे मेरा existing investment down हो गया, या फिर ये सोचे जो है वो तो डाउन है, कोई बात नहीं, लेकिन आज का ये NAV मुझे दोबारा शायद ना मिले, आज मैं थोड़ा सा परचेज करूंगा, because my goal is still 20 years away or 10 years away or 5 years away. And I think that for that, today is a good rate to buy. You should have to keep aside the old data and think about today as an opportunity, because your ultimate goal is still far away into the future. And remember, even after the fall today, the market is still far better than where it was 5, 7, or 10 years back. Similarly, in spite of the fall today, the market will be far higher from 5, 7, or 10 years from here also into the future. Yeah, very well explained, Mayukh. And here's a question from partner. Planning for long-term goals, how should we decide the proportion of equity and debt in the SIPs? Sure. So please think about it. In all our material from the mutual fund industry, one of the best-selling graphs is a nifty graph which we show from 92 till up to 2022. 30 years the graph is up. And we say that if Indian economy has done well, everything has done well, then this graph has gone up. Please do an investment into Indian equity. The other graph which we don't talk about is that during the same period, interest rates have come down from 15% to now below to 6%. So you can make money on the debt side also, right? Now it is a matter of allocation. I would say, if you look at the last 10 years also, if equity markets have done well, please understand that interest rates have come down from 9.5% to 6%. That is also the reason, or that is the
tailwind by because of which equities have done well, because it's a simple case. Interest नीचे जाएगा, कंपनी की अर्निंग अच्छी होगी, सिमिलरली इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो आपका डेट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा. So in debt, my strongly I believe is that there is far more better things to do SIP in debt than there is in on equity. Why? Because there is a lot of short-term requirements of investors. As I talked about an example of 4 to 5 lakh rupees outflows, which the investor doesn't give to the mutual fund distributor, but is happily doing recurring in the bank at an inferior interest rate. There, if we can give a solution that for your short-term requirements, please do SIP in debt, and every year your system will only throw up that this SIP was done for a requirement which is coming up every annual amount. So that amount has been accumulated. Please do SIP there. And that is where the investor will slowly open up more of his wallet to you. For the long-term holding, there has to be investment, which is long-term, I'm meaning goals which are beyond 10 years, 15 years. That is where your equity SIP should be predominant, but there should also be some amount into debt also. If you cannot do that breakup, then a large part of your long-term holding for retirement or for whatever reason should also be in hybrid funds, because that asset allocation is happening on its own and you don't need to worry about it. Yeah, great. So with the high duration debt funds for 5 to 10 years, what could be the expected returns, not with the short duration funds? So I would say today at 7% GSEC, if GSEC goes to 7% and above, I would happily do lump sum into that fund. And I would only buy 10-year GSEC because of reasons. It may be volatile, but I'm ready to give it time. It doesn't carry any credit risk. It only, no liquidity risk, only is an interest rate risk. From here onwards, if you think, and here is what I would like to tell everybody, अगर आपको लगता है कि यहाँ से इंडियन इक्विटी रिटर्न देगा, डेट नहीं देगा, और डेट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो कंपनीज की अर्निंग भी नीचे जाएगी. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जस्ट बिकॉज मैं इक्विटी में इन्वेस्टेड हूं तो इक्विटीज ही ऊपर जाएगा और मैं डेट में इन्वेस्टेड नहीं हूं तो डेट का कोई रिटर्न नहीं होगा. आई डिसएग्री विद दिस. दिस इज सम बायस व्हिच प्लेज आउट. If interest rates are going to come down, debt and equity both will give returns. This is what I importantly showed in that slide, that if equity has given a return of 14%, debt has given a return of 9.5%. Why 9.5%? Because debt is supposed to be lesser volatile. So the range of return on debt is lower, but then the outcome of 9% is also lower. No problem, 9% is also a great return. Because to get that 14%, I have to stay invested in March 2020 also. I have to stay invested in all of 2008 also. How many people can do that? So in the long term, you have to have an allocation to debt, and you can expect a return. If today, in other words, if you think that India is going to do well and interest rates are going to go up and still equity will do well and debt will fall, I disagree. Because in the last 10 to 15 years, when interest rate fell, debt and equity both gave returns. So today at 7% GSEC, debt and equity again has to come down. Sorry, if 7% GSEC, if you think after 10 years, 10-year GSEC will still be at 7%, then I'm going to debate what is going to be the equity returns. Because interest rates will be high. Agar interest rates high hai, who is consuming or which company is going to give very superlative income? So what I'm trying to say, the event is same. The hypothesis, the assumption, सब जगह same है कि interest rates नीचे आएंगे. अगर interest rates नीचे आएंगे तभी equity return देगा. Equity इसलिए return नहीं देगा कि मैं और आप equity fund में SIP कर रहे हैं. उसका ingredient, उसका tailwind यही है कि interest rate नीचे जाएंगे. और अगर interest rate नीचे जाते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, equity भी return देता है, debt भी return देता है. एलोकेशन आपके हाथ में है, बट ये इस वजह से रिटर्न नहीं आएगा कि इंटरेस्ट रेट तो ऊपर जाएगा इसलिए मैं डेट में नहीं लगाऊंगा, और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा और मेरे इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा. आई डिसएग्री. मैथ्स, हिस्ट्री डजंट शो दैट वे. इफ इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन, बोथ एसेट क्लास हैव परफॉर्म्ड, एंड दैट इज वेयर एसेट एलोकेशन हैपेंस. Long answer, but I'm repeating again, don't assume just one thing because you are invested in one part of the market and not at the other part of the market. And here a partner is asking a live example. For a 50,000 SIP portfolio,
So how many funds we can recommend, and to what proportion we can give it into sectoral funds for a period of 20 years? Okay, great question. I would say that majority of your money should be into large cap, large and mid sort of products, because somebody who's investing for a long period of time, it's not everybody can stay invested into mid cap and digest the volatility which comes. You will get returns in mid cap, but there are years when mid caps do not give returns, and there are more years when mid cap actually becomes a headache. So if you are willing to stay invested during those volatile years, that's when mid-cap turns out beautifully for it. Easier said than done. Not many people stay invested. So majority of the holdings should be into large and mid. There is then a beautiful category like ELSS should have investments which are more than what the 1.5 lakhs or 1 lakh rupees somebody is targeting to, because that is a forced investment. And they run in a flexi cap strategy. So running a flexi cap and a tax saver usually runs a flexi cap strategy. I am not a big proponent of very large investments into small cap funds. Reason being because small cap funds, when the fund size is small, they are very good because the free float or the actual available free float stock available in the small cap space is less. So therefore, today a 2,000 or a 3,000, 5,000 crore small cap fund can get worthwhile stocks to buy. But I really debate, unless liquidity in Indian stock markets go up, that a small cap 10,000 crore small cap fund has meaningful things to stay invested. So instead of having large allocation to small cap, I would rather say that at the same risk profile, rather I would invest into sectoral products, and then by itself that part of that allocation will become like a multi-cap or a multi-theme SIP allocation. So I would rather buy banking, I would buy consumer, I can probably look at infrastructure, not a great story, but some other theme, look at pharma. So rather than looking at small cap, which is also high risk, high return, I can look at themes which are also high risk, high return, but I can allocate a little bit more. So that is my personal view on that. And for anything which is 3 years, 4 years and recurring outflows for investors, I will start on the SIP mode on the debt side. All right. So we don't have any more questions, Mayukh. Sure. So thank you so much for a wonderful session, and you have pretty well covered the topic on buying in bad days, helping rupee averaging, starting an SIP with a goal oriented, and debt SIPs for short term requirement by not disturbing long term equity. So yes. Overall, the session was wonderful and very much helpful for the partners. And so we are at the end of the program. So thank you so much for joining. Okay, thank you so much. Thank you, Manoj. Thank you, the whole AssetPlus team, for giving me the opportunity to bring forward some thoughts which are slightly different. I hope your partners have found value in that. If you have any feedback about the session or anything else you want us to cover, and please, all feedback is welcome. Even if you didn't like the session and why you didn't like it, would be a great feedback. If you liked it also, thank you so much for that. Thank you and take care. Thank you so much. Thank you. Thanks.